mean the provision prefaced with such words is a subordinate constitutional provision. It also cannot mean once the province has devolved certain powers on the local, its legislative, executive authorities is faced by the local government. So basically, it is a restrictive thing and says that it's a bar, not a enabling provision for legislation. Then what is the meaning of subject to law? My humble submission is that subject to law does not mean implies the implementation rather than grant of power, number one. It doesn't imply, it implies limitation rather than grant of power. If rule-making power is made subject to legislation, sir, then the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. Constitutional grant of rule-making power is construed as a continuing power, sir. So there cannot be any limitations on that, or constitutional power given that. It is not an enabling provision. Subject cannot mean subject to legislation, sir. If subject law is interpreted as Supreme Court's rule-making power as subject to, then that would be a grave violation of independence and separation of powers doctrine, sir. Subject law means substantive law. Subject to law means substantive law as distinguished from pleading and practice. Substantive law includes much more than legislation. It includes common law. Subject to law means rule-making power as to practice must not invade the field of substantive law. So there has to be something existing. It cannot invade the field of substantive law. But it does not give them the power to legislate, sir. And, sir, with your Lordship's kind permission, I have prepared What you're saying is that the Parliament cannot make rules nor legislate regarding the rules. And all the Parliament can do is, subsequent legislation नहीं हो सकती. ये जो existing law था उसके दायरे कार में रहते हुए और कानून आप rules नहीं बना सकते. के दायरे कार में रहते हुए power in any event vests in the Supreme Court. Supreme Court exclusively, sir, because the word used is not just rule making; it is regulate. That we can by rule regulate the practice. Now I'll read the provision. Yes, my lord. Let's reframe the whole provision. My lord. It says, now let's read it like this. My lord. The Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Yes, my lord. So are you saying that Supreme Court had to be advised about the Constitution, had to be advised about the law, because it would make rules which will be completely in violation of the Constitution and the law? So it would have been much simpler drafting to start it with the Supreme Court may make rules regulating the practice and procedure of the court. Your contention is that a high body, as the constitutional body, as the Supreme Court, had to be reminded that there is a constitution in existence. Don't violate it. That's a very strange proposition. No. You are putting redundancy to the words subject to the constitution and law, because what you are saying can equally be said by deleting these words. My lord, with the utmost respect, my lord. If you read it let's hear the counsel. Yes. Please सुन लेते हैं counsel को. I'm also reading it the same way. The Supreme Court may make rules and regulating the practice and procedure of the court, My lord. subject to the Constitution and the law. My lord, Which means Supreme Court can make rules, yes, whatever rules it wants to make. Ji. But it can't go beyond the Constitution or any law which already exists. So there तो is वो a मेरा सवाल limitation. अपनी जगह ठहरा हजूर आप जवाब तो दे जी, दें. my lord, with the utmost respect, I'm not reading it Utmost respect को छोड़िए सिर्फ जवाब दे as. दीजिए. अच्छा सर, आपके साथ. मेरा वक्त की But I'm कमी just- है. जी, I know, my lord. I'm just saying that subject to law, subject means some kind of मैं आपसे restriction. कुछ और मैंने आपसे Sir, आपका अच्छा आप redundancy- फिर से आप देखें जो मैंने सवाल है उसका तो आप जवाब सर, नहीं मैं आ दे तो रहे. जाऊं उसमें। नहीं आप आएंगे तो अगर दिन निकल जाएगा. मैंने कहा अगर ये हम लफ्ज काट दें सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, फर्क क्या पड़ेगा फिर? जी, ये इसका सवाल का जवाब दे सर, दीजिए. फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पॉइंट इज दैट नहीं पड़ेगा ना. नहीं, लेकिन Thank you. इशू ये चलिए नेक्स्ट पॉइंट. नहीं सर, पहले अभी सुन तो ले, मैं कंप्लीट तो कर लूं सर आपकी इजाजत से. अगर फिर भी कोई लॉ आप रूल नहीं बना सकेंगे which violates any provision of the Constitution. Is this something to be taught to the Supreme Court? No, sir, but I'm humbly submitting subject to law does not mean the Parliament can legislate. That is my humble submission. Subject to, क्योंकि जहाँ Parliament, जहाँ Constitution power देता है Parliament को बना दिया, specific words are used. चलें खैर, जी. अब पता नहीं आप redundancy I'm not assuming it is. I'm one, just two, saying. 3, 4, 5, 6 words of the Constitution we can delete
as rendered meaningless. So I'm reading it like that if I accept your so contention. subject to only means, my humble submission is that subject to only means that there's some kind of a restricting, because the constitutional power, which is a continuing power, is being given to the Only a point Supreme noted, Court. next point. Ji, the point is that the words used in the if Parliament, if Constitution is giving power to the to make any law, it specifically used certain words in the Constitution. If my Lord kindly sees 154(5), Article 154(5). Next page. My Lord, until Majlis Shura Parliament makes provision by law in this behalf, the Council may make its rules of procedure. These are the words. Then Article 6.3, my Lord, if my Lord kindly sees Article 6.3. Article 6.3 or 63? 6.3. Article 6, subclause 3. I see him. 6, Article 6. Majlis shall by law. Article 6, my Lord. Ji. Ji, pad liya? Ji. Majlis shall by law provide punishment of persons found guilty of high treason. Then my Lord will kindly see 151(2). Freedom of trade. And my Lord also reads 150, subject to clause 2, trade, commerce, intercourse throughout Pakistan shall be. Majlis-e-Shura may by law impose such restrictions. May by law. Again, sir. Then my Lord, what is the point you're making? I'm making. You're just citing different provisions. My Lord, if the word in the 191 was the Parliament can make law, these kind of expressions as provided in the Constitution would have been used, my Lord. My humble submission is that when the Constitution is giving the legislature a power to enact a law, then specifically words are used in the part. Mr. Zubairi, there's another question. My Lord. Once the rule-making power has been exercised, My Lord, by the Supreme Court in terms of the Constitution, because the power vests in the Supreme Court, can subsequent legislation displace, as this Act purports to do so, can subsequent legislation displace the rules that have lawfully been and constitutionally been framed by the Supreme Court? No, my Lord, that's my humble submission. They cannot, for the simple reason, because then it will become ad nauseum. For example, can now the Supreme Court, which can make law regulating its practice procedure, make a law overriding the Parliament's making of the law? Then the Parliament will do it. Then where will we stop? So my humble submission is that could not have been the intention of the framers of the Constitution, that to give power to Parliament, because there are separation of power doctrines there. Once the Honorable Supreme Court has made the rules regarding regulating the practice procedure, the Parliament does not. But that practice and procedure, the rules, cannot be in violation of any constitutional provision, any law which existed, sir. So the core question is, where does the Constitution confer, in which institution confer the power to make rules? Ji. Whether it is the Parliament or is it the Supreme Court? Ji. If it is the Supreme Court, the only restriction is that the Supreme Court can do so within the framework of the Constitution and the existing law. My Lord. And that's it. Yes, the my Lord. Parliament cannot, because the power does not vest in the Constitution in the Parliament in terms of Article 199. 191, my Next point. My humble submission on this score is that that's the reason I was saying. I would really want to hear you, Mr. Zubairi. Sir, my Lord is asking a question. नहीं वो आप बात तो करें फिर सवाल उठेगा यकीनन. पूछ रहे हैं, इसी बात से सवाल उठा है, sir. जी. Now, if I may ask you, these words subject to the Constitution, if these words were not there at all, and the Supreme Court were to make rules, and someone were to point out, well, sir, this proposed rule X is contrary to the Constitution,
the answer would presumably be, the Supreme Court would say, well, okay, yes, you're right. So we can't make rule X, right? So in that sense, saying subject to the Constitution is always redundant. Yes. Because it's always going to be there. There. Seems to me, but there's the question that perhaps there's a more subtle point here. The Constitution, of course, can also be amended. Yes? Yes, Under madam. Article. But by and large, the Constitution is regarded at any given time to be fixed, right? This is it. Underneath it, whatever happens by the judiciary, by the executive, by the legislature. So maybe the point in saying subject to the Constitution is not to make the obvious point that everything is always subject to the Constitution. Everyone knows that. But rather to fix the position of law. That when the rules are being made, what you just said, Yeah, Lord. when the rules are being made by saying subject to the Constitution and the law can only be as at that time. At that time, sir, when the rules are Maybe framed. this is the point that is being made here, because Yes. otherwise I was thinking about this, and I've been thinking about this since the case started. Why say subject to the Constitution? Ji. Because everything is always subject to the Constitution. Ji. Mr. Maybe Zuberi, that's the I most just want to subtle say point. one thing. The day we hear this case, the weeks we hear this case, our institution exceeds our disposal. The day we don't, our disposal exceeds our execution. If you think this is a never-ending hearing, this is the last day of the hearing. My lord. Please remember that. You can argue till one thing be expressed in judgments. I want to hear counsel. Sir, when a I question... mean, if you, My lord, I... please continue. We will restrain ourselves. You just continue your argument so we can be enlightened what you want to tell us, and we can record it, and we can either agree with you or disagree with you in our judgments. Sir, my lord, Please, next point. Please go on to the next. Please go on to the next point. So my point is that, again, my lord, that when the law is being given to the parliament, the specific repeat na karo na, point so hence subject to law, and for that I want to take you, my lord, I have placed certain case law before lordship, if my lord has that. दीजिए, जी। दे दिए या देंगे? ये रखे हुए हैं सर। पहले से नहीं दिए? सर दिए हैं, बहुत पहले से दिए हुए रखे हुए हैं। आज? नहीं सर, मतलब उन्होंने कहा जब आप आर्ग्यू करेंगे उस वक्त दीजिएगा, मैं तो कब हर रोज लेके आ रहा हूँ सर। Sorry, this is most unfair. हमने कहा था लोगों को फाइल कर दें। तो ये केस हम हाँ, but ठीक है, you are right, we are wrong. नहीं सर, we have told everybody to file. हाँ, भी कागज के टुकड़े आ रहे हैं बीच में से। और ये कोई आसान चीज है पढ़ना? इस लॉ है सर, इसमें। तो पहले नहीं कर सकते थे फाइल? इन दुनिया में ऐसे होता है या सिर्फ निजाम अदल में ऐसा चलेगा? बाकी दुनिया की हम तारीख में बताते हैं ये जरा प्लीज ठहर जाइए ना कि अमेरिका में क्या होता है, विलायत में होता है, आप ये करें अमेरिका विलायत में जा करके, फिर क्या होगा आपके साथ? वहाँ तो आप सारे वेस्टर्न ट्रेडिशंस बताते हैं, इस्लामिक ट्रेडिशंस तो बताते नहीं हैं। अगर कागज के मामले में ठीक है भाई, मेरी मर्जी जब मैं करूँ। Such a senior counsel. My lord, may I take page 144 of this? Is a case. या आप हमें proposition बताएं, पहले proposition बताया जाता है। How a subject to law has to be interpreted. That is my. ठीक है, बता दें केस का नंबर। Case is page 144 of this booklet, sir. जी। Winberry versus Salisbury. It's a case from the American jurisdiction, and they have interpreted this word. What is the meaning of? And their constitution also provided this thing. And their constitution also permits of documents in courts. चलिए खैर, 144. Sir, this is just a ये case law which सुप्रीम I'm कोर्ट का है, citing. ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं जजमेंट? sir, it is Supreme Court of New Jersey, sir. अच्छा ठीक है। जी. My lord, page 145, if my lord kindly sees the sixth line from the top. देखिए वो जरा मुनासिब नहीं लगता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल बेंच में, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी का जरा ठहर तो जाइए ना। हमें हमारा लेवल इतना लो तो ना कर दें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका तो बताए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी को हम फॉलो करेंगे। सर मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि हाँ बता दें, ज़बानी बता दें, हम आपकी बात में ज्यादा वजन है बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ न्यू जर्सी में। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का लफ्ज नहीं है, लेकिन उनके जो स्टेट्स हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह के लफ्ज हैं। Kindly see, the Supreme Court shall make rules governing the administration of all courts, state, and subject to law the practice and procedure of all such courts. This is the law which they interpreted. And my lord, it says at para 2 on page 145.
phrase subject to law. The phrase subject to law is not only ambiguous but elliptical. No What word is what does elliptical mean? Sir, मतलब कि it is confusing. बताइए. जी. You're reading a word. जी. You tell us the meaning of the word. Continuous, sir. Continuous. No word in the law has more varied meaning than the term law itself. Nor is the phrase subject to crystal clear, for the phrase implies a limitation rather than a grant of power. It is argued by plaintiffs subject to statute or legislation. It is argued. जी, judgment भी नहीं है. जी आ रहा हूँ sir. If subject to, अब नीचे last paragraph sir. If the subject were to interpret it to mean subject to legislation, it would necessarily follow that once the legislature has passed a statute in conflict with the rule of court, the rule-making power of Supreme Court will become functus officio. For it would intolerable to hold, as has been suggested to us, that after the legislature has passed an act modifying a rule of court, the Supreme Court might in turn adopt a new role overriding the statute, and so on ad nauseum. And yet, if subject to law means subject to legislation, any other construction of rule-making power would be in conflict with fundamental rule of constitutional constraint that unless the context clearly requires otherwise, a constitutional grant of authority is to be interpreted as a continuing power. My lord, then the last three lines, page 146. All these page 147 से पढ़ लीजिए. जी हाँ, उसमें आ रहा. Page 147 last two lines से पढ़ जी लीजिए. बहुत बेहतर. वो वही आ रहा है, नीचे आ रहा है. जी इसमें फिर सर पेज 146 पे 147 की लास्ट टू लाइन से पढ़ लीजिए ना, वो आपको थोड़ा सा उसमें जवाब मिल रहा है. जवाब आ रहा है कि मैं कुछ आपको पॉइंट आउट करना चाह रहा हूँ कि पेज 146 के लास्ट तीन लाइंस देख लीजिए. मैं सिर्फ जो पॉइंट्स हैं उसको आपको दिखा दूंगा सर. It is conceivable that the people granted continuing power to the courts in all these respects or withheld it with reference to rule making, sir. Then, my lord, page 147. Last two lines. Okay. If the Raj may amend the rules, or it may decide the extent to which the law division charge shall exercise the powers and functions of other division. It may control the degree to which legal and equitable relief may be granted in any cause. We think it may be safely, and that no such thoughts are ever in the mind of the member of Constitutional Convention or any citizen who voted for the Constitution. Yet, if subject to law means subject to legislation, such results might inevitably follow. The courts, in some of their essential judicial operations, instead of being one of three coordinate branches of state government, would have been rendered subservient to the legislature in a fashion never contemplated by any. What then is the meaning of subject to law? The only interpretation of subject law that will not defeat the objective of the people to establish an integrated judicial system which is independent and which will at the same time give rational significance to phrase is to construe it as equivalent of substantive law as distinguished from pleading and practice. The distinction between substantive, which defines our rights and duties, and the law of pleading and practice, or through which such rights and duties are enforced in courts, is a fundamental one that is part of daily thinking of judges. Substantive law includes much more than legislation. It comprehends also the rights and duties which have come down to us through the common law. The phrase subject to law in Article 6 of the Constitution thus serves as a continuous reminder that rule-making power as to practice must not invade the field of substantive law as such. While the courts necessarily make new substantive law through the decision of specific case in common, they are not to make substantive law wholesale through the exercise of rule-making power. That is the concept. So subject to law does not give power to legislate. It is not subject to legislation. Where it is made subject to legislation, then the Constitution uses the words. Make such, as pointed out. ये कई articles हैं of the Constitution, मैंने 154, 150, then 140, Don't repeat. 240, 241 and 242 के अंदर भी यही लफ्ज हुआ है, make by Mr. law. Abid, the law which is in dispute has been made pursuant to Article 175(2). Yes, I'm coming This to is the power of the judicator. Sir, but utmost so, respect. in the law itself, pursuant to Article 175(2), Read with Article Article 191. 191. Article So 191. we are making much time on 191. What about Article I'm coming to that. 175(2)? Because I'm no grateful to court has jurisdiction unless conferred by the Constitution or the law. Yes, but 175(2) cannot be read in isolation. That is No, the no, judgment of it this is, court. it is the dedicated to the judicator. Sir, may I please So submit? power of the court are covered under Article 175. Read with Article Read 142. with, that is the law that have made under pursuant to 190, read with 191. Yes, but the law has been made pursuant to Article 175. My lord, उसको पढ़े ना 2 में आपके वो जी, हाँ। jurisdiction, जी। किसी कोर्ट का jurisdiction जो है, that is related and इसका based on मतलब the फिर problem- premise of जी, बिल्कुल आप Article सही कह रहे हैं। 175(2). My lord, then
provincial law भी आपके लिए कोई नहीं province है. बना The सकता है. courts 175. There Two. shall be a Supreme Court of Pakistan, a High जी. Court for each province. And such a And court a as High may be Court for established by Islamabad. law. In no court, number Article 2, G, no no court court shall shall have have any any jurisdiction save as is or may be conferred on it by constitution by or under any law. That is synonymous. But humble submission is that this honorable court has interpreted when it deals with the Supreme Court, it has to be read with two further articles, Article 142A and Entry 55. May I take your lordship to Article 142A? Yes. And that is the judgment of this honorable court, sir. So this article, I don't understand. It's not a standalone article, sir. It is? Does no. With humble submission, that is. No, you are now reading words into the Constitution. I'm reading- No, where does it say it's not a standalone article? It's because the judgment of the So you Supreme can Court says imply so. it, but it doesn't say so. Sir, I'm not saying anything on my own. I based my arguments on case law and I cite a case law on that of this honorable what they have said. I think the whole object of a full court hearing counsel is being missed. If all we are going to do is keep referring to case law, we are sitting, the full court is sitting. I don't even think you understand the gravity of it. To understand, to learn from counsel. Refer to this judgment, refer to that judgment. Bhai, the plain words of the Constitution, you don't want to read. Then you want to read New Jersey Supreme Court. Let's read plain words of the Constitution. Let here counsel formulate submissions on that. Then by all means, if there is some ambiguity, we can go to precedent. My humble submission You see, is that the main rule for constitutional interpretation is that the entire constitution has to be read as a whole in a context. You cannot pick up one article and just read it in isolation because there are other articles which either may restrict or enhance that power which exists in and one how that power is to be particular exercised. What is the law they are talking about in Article 175(2)? No court conferred on it by constitution or by under any law. So the only two articles of the constitution when it concerns the honorable Supreme Court is Article. ये बार honorable Supreme Court नहीं होता है. Supreme Court honorable judges होते हैं. अंग्रेजी का तो सही इस्तेमाल कर लेना. Honorable Parliament नहीं कहते हैं. ये भी आप भी करते हैं. हम यही करते हुए आ रहे हैं सर. चलिए आगे चले point बताएं ना आगे. My humble submission is that Article 175(2) जी ठीक has to हमने be point read note with आपने कहा has to be read with Article 142A and Entry 55. 142A and Entry 55. Let's read 142A. Mr. Zubairi, the point it seems to me over here is the question that when we are talking Article 191, we are talking of practice and procedure. Ji. Are we really talking of the jurisdiction of the court? No. We are talking of a direct grant by the Constitution Of the regulation. of rule-making power with regard to practice and procedure. Yes. So, when in this act, in the preamble, when reference is made to Article 175(2), which relates to jurisdiction, Then then you go to 142A. What is would that be correct, or would that perhaps be not entirely correct? Because here we are not talking of the jurisdiction of the court, but of its practice and procedure. बिल्कुल सर. अभी साहब इस कानून ने एक और काम भी तो किया है. इस कानून ने एक अपील का हक भी तो दिया है. तो वो प्रोसीजर में तो नहीं आ सकता है ना. तो वो सिर्फ 175 मेरे जहनियत के मुताबिक वो सिर्फ 175(2) ही में आ सकता है. उसको प्रोसीजर मैटर हम नहीं समझेंगे. वो भी तो एक जुरिडिक्शनल पॉइंट है. वो 142A और एंट्री 55 के तहत आपको पढ़ना होगा. बता दें हमें. जी 142A देखें सर. Because they are not the word 175. पढ़ लीजिए प्लीज. 175 talks about jurisdiction. 142A sir. नहीं आप शुरू से पढ़िए 142. यहाँ भी subject to the constitution लिखा हुआ है. मैं आ रहा हूँ सर. Subject to constitution. मजलिस शूरा shall have. नहीं ऊपर subject to the constitution. जी अब इसका बताएं इसका क्या मतलब है. The constitution is subject to it. It cannot be any law cannot be in violation of any constitutional provision, existing provisions of the constitution, sir. Majlis Shura Parliament shall have exclusive power to make laws with respect to any matter in the federal legislative list. So this power to make law, exclusive power to make laws as provided in federal legislative list, sir. And now entry 55. आप हम यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर देख रहे हैं. आप कहते हैं कि रूल्स बनाने का इख्तियार दिया गया है और सिर्फ लॉ के तहत नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉ होगी.
अगर आप इंटेंशन ऑफ पार्लियामेंट देखना चाहते हैं तो आप आर्टिकल 175A सब आर्टिकल 5 देख लें जी सब 4 जी यहाँ पे सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं है। ठीक सर। द कमीशन में मेक रूल्स रेगुलेटिंग इट्स प्रोसीजर। जी अगर इंटेंशन कॉन्स्टिट्यूशन मेकर का ये है कि वहाँ तो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ होना चाहिए, तो यहाँ क्यों नहीं दिया गया सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन? because humble submission is पढ़े that तो- कि ये जरा पढ़ लें। जी I'm reading it. 175A The commission may make rules regulating its procedure. Sir, kindly यहाँ तो सब्जेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सर आपने तो इससे इंटेंशन आप क्या अखज़ करेंगे? फुल कोर्ट ने तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की रूल मेकिंग पावर, रूल की कोई प्रोविजन नहीं, उस पे भी कहा है दे कैन मेक रूल्स, द सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल कैन मेक रूल्स व्हिच विल हैव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस। ये है जजमेंट ऑफ द यहाँ पे ऑनरेबल। मेरा सवाल शायद मैं नहीं समझा पा जी रहा। मैं आप समझ गए, सब आप कह रहे हैं इसमें क्यों नहीं हमने इस्तेमाल। इंटेंशन देखना है। जी यहाँ पे तो ये कहा है विदाउट मेंशनिंग द वर्ड सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। जी यहाँ सिंपल कहा है द कमीशन में मेक रूल्स। जी इससे तो बात समझ आती है कि आपने रूल लॉ को नहीं देखना जो एग्जिस्टिंग है या पहले से है। जी वहाँ पे ये दिया गया है कि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये तो अंडरस्टूड है, सब्जेक्ट टू का मतलब है उसके ताबे होने चाहिए। जी अमूमन होता भी ये है कि पहले इट्स अ रिस्ट्रिक्टिव वर्ड सर, नॉट एनेबलिंग पहले प्रोविजन। एक्ट बनता है उसके बाद रूल बनते हैं। जी रूल कभी एक्ट से ऊपर नहीं होते हैं, ना एक्ट से हट कर होते हैं। कोई भी रूल अगर बनाया जाए वो एक्ट से, एक्ट के डोमेन से या कॉन्स्टिट्यूशन के डोमेन से बाहर होंगे तो स्ट्रक डाउन होंगे। तो यहाँ तो ये जरा बता दे कि इंटेंशन वाज़े नहीं है दोनों आर्टिकल्स में। सर इसमें मेरा humble submission will be that in this case sir still no rule can be made in violation of the constitutional नहीं, provision. अब आप सवाल का जवाब या तो सवाल नहीं समझे, मैं आपके लिए आसान तरीके से बता देता हूँ। माय लॉर्ड पूछ रहे हैं आपसे यहाँ। कि जहाँ तक जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वहाँ ना सब्जेक्ट टू लॉ है ना सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन है, इसका मतलब एक मतलब तो ये निकलता है कि ना कोई लॉ बन ही नहीं सकता है उसके मुतालिक, वो हमेशा कमीशन खुद ही बनाएगा अपने रूल्स। ये सिंपल रीडिंग है जी। और वहाँ 191 में सब्जेक्ट टू लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिख दिया गया कि आइन में भी हो सकता है और लॉ में भी हो सकता है। तो ये उन जमाल साहब की अंडरस्टैंडिंग गलत है तो जरा समझा दीजिए। नहीं बिल्कुल सही, मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि जहाँ सब्जेक्ट टू यूज होता है वर्ड, वहाँ ऑलरेडी के कोई रूल इसके वायलेशन में नहीं बन सकता, which is already existing, subject to constitution, subject to law, already substantive law exist करता है। उसमें आपकी रेगुलेशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे आप नो रूल फिर इसमें अगर नहीं यूज किया गया तो इसका मतलब ये इसको सब्जेक्ट ताबे नहीं किया जा रहा है। ठीक है, ये आपका इंटरप्रिटेशन जी, इसको ताबे नहीं किया जा रहा है, but still no rule can be made in violation of the constitutional provision or any law. ठीक जी Mr. Zubairi, is it हेलो so that it is the only Supreme Court which can make rules under Article 199? High Court and Federal Shariat Court, they are having the same powers? Sir, 202 of the Constitution gives the power to make rules to the High Court, sir. And is there any law made for those two courts? उनके अपना procedural laws हैं High Court में, and that judgment of a single bench judgment was cited by Mr. Bhandari on the last date, early 2021 Lahore, which deals with what is the meaning that rules can be made, but they are no, they have to be read with anti 55 does not apply to them, because that's why the rules of law reforms ordinance की बात की थी। Parliament has put up clog on the Supreme Court. Why not on High Court and the Federal Shariat Court? The High Court में है What were those 202 special sir. reasons to constitute this act? Sir, 202 kindly be seen. Subject to constitution and law, a High Court may make rules regulating the practice and procedure or of any court subordinate to it. So 202 is 203J is the जी Federal Shariat Court. जी 203 नहीं, आप माय लॉर्ड का सवाल नहीं समझे। आपका पहले वाले सवाल का जवाब ये था क्योंकि रूल्स बन गए हैं तो अब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ इज बीन रेंडर्ड इफेक्टिवली मीनिंगलेस। माय लॉर्ड का सवाल ये है, अगर आपकी ये बात सही है तो सुप्रीम हाई कोर्ट के कौन से रूल्स और फेडरल शरीयत कोर्ट के कौन से रूल्स बन गए थे, ये फिर इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब आपने नहीं दिया। सर पहले मैं आपकी बात का वो जवाब दे दूं। नहीं, मैंने सवाल नहीं पूछा, मैं सिर्फ आपको माय लॉर्ड का सवाल बता रहा हूं। आपने कहा कि अब नहीं, मैं अभी भी कहता हूं आज आप रूल्स बनाने जाएं, they cannot be in violation of the constitution, subject they have to be subject to any substantive law. I can only use one word for it, profound. जी, but still आपने ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि जी अब नहीं हो सकता। My lord, rule making power is a continuous power.
मगर माय जी। लॉर्ड का जवाब नहीं दिया आपने जी सवाल मैं का। दे रहा हूँ उस पे सर, इसके अंदर भी जो लॉ उन्होंने बनाया है, that has to be subject to constitution and the law, and that is the interpretation given in the judgment of. इसके लिए तो कोई And you see, legislation नहीं हुई ना। the Lahore High Court in a full bench judgment, जब ये क्वेश्चन अराइज हुआ था कि गवर्नमेंट ने भी लेजिस्लेशन कर दी थी और हाई कोर्ट ने रूल्स भी बना दिए थे, द हाई कोर्ट सेड यू कैन नॉट डू दैट। Do that, जी। Once the power vests in the High Court, the government or the legislature cannot legislate in matters relating to rules because the rule-making power exclusively vests in the High Court. जी। So this is, अगर judgment जिस पे आई PLD 2021 Lahore page 544 and relevant portion is para 61 page 580 onwards, sir. पढ़िए जी। पढ़िए। PLD it दोबारा साइटेशन बताइए। PLD 2021 Lahore page 544. My lord, para 61, आपकी बुक में कौन सा हिस्सा है? page 580, page 561. की बुकलेट में कौन सा है? जी, बुकलेट में नहीं है सर, मेरे नोट्स भी हैं, मैंने अपनी CMA भी दाखिल की हुई है, पर क्योंकि माय लॉर्ड ने पूछा तो इसलिए मैं निकाल के पैरा 61 और बात 202 पहले कोट करते हैं और फिर आई विल रीड दिस पैराग्राफ सर। ये पेज 544 आप कह रहे हैं? 580 सर, ये तो it starts at page 544 and relevant portion which my lord's observation is at page 580. सिंगल बेंच का जजमेंट है। जी, Why you are citing it before full bench? तो इसमें इंटरप्रेट हुआ है हाई कोर्ट की पावर्स के ऊपर जो 202 की पावर्स हैं। जी, सिंगल बेंच का जजमेंट फुल कोर्ट को साइड फर्क पड़ता है क्यों नहीं पड़ता? इसमें एक लॉ बना दिया था, अमेंडमेंट लॉ और रूल्स में अमेंडमेंट कर दी थी, दैट वाज चैलेंज एंड दैट वाज सेट असाइड। काइंडली मे आई रीड विद लॉर्डशिप काइंड परमिशन? You want to? G. Thus, the High Court have been conferred the constitutional power regarding rules and procedure, which may not only regulate the practice and procedure of a High Court, but also any court subject to it. In exercise of this power, HC has made rules entitled High Court Rules and Orders, which contains elaborate procedure to be followed by the court subordinate to it in matters relating to adjudication of cases before civil court. Thus, not only has the High Court been delegated the power of making and amending rules in the first schedule by the court itself, but also by the Constitution by virtue of Article 202. The central question regarding power of High Court has escaped the attention of Government of Punjab while promulgating the amendment ordinance, which impinges upon the powers of Lahore High Court to enact and amend the rules. This proposition being stated for a simple reason that the amendments issued by amendment ordinance are made part of the substantive body of the court, not in the rules comprised in the first schedule, and also, almost all of them relate to details of procedure to be followed by civil courts in adjudication of cases, which as numbered has traditionally been part of the first schedule. A grossly egregious and anomalous situation has now been created with pits and procedure introduced by amendment against the amendments made by Lahore High Court, which now run a parallel course. There are serious contradictions between the two processes, which is most cases are irreconciled. Although, I'm reading from the last line, although in such matters considered as is not normally assigned, but in peculiar circumstances where across the board amendments in the rules have been made by committee of the High Court only a few months, Government of Punjab is obligated to have consulted LC for purpose of reconciliation. Also, while a reference to Article 2 of the Constitution has already been made, it also by implication follows that exercise of rule-making powers is constitutional, which resides in the High Court. Therefore, if such power has already been exercised, emerges as an unwritten rule to be followed in all such matters that is of utmost importance concern to be held and the government of province. It is not only essential but also to preserve the independence of that is unique situation where judicial legislation is permissible. So this is the thing that once the constitutional power has been exercised by the court, because these rules made by this court have constitutional backing, this is what the judgments have said, it has constitutional backing. Even the rules under the Supreme Judicial Council, PLD 2021 Supreme Court page 1, page 94 says that though Supreme Judicial Council does not, the law does not allows them to make rules, but they made the rules, Supreme Judicial Council, and those rules have constitutional status. This is very look at Article 203E in Yes. relation to the Federal Shariat Court. Ji. Take a look at Clause 2. 203 capital E, Clause 2. My lord. Yes, my lord. The court shall have power to conduct its proceeding
and regulates its procedure in all respects as it deems fit. This doesn't seem to be regulated by law. No, it doesn't, sir. So therefore, does this mean that the rule-making power of the Federal Shariat Court is on a higher pedestal as compared to the Supreme Court or the High Court? No, my humble Can't submission, be. both are constitutional powers, sir. So- Both the Supreme Court, the High Court have been granted. I'm just coming off from what my learned colleague was asking you about the rule-making power of Federal Shariat Court. If read literally, this would mean that the Federal Shariat Court is put on a pedestal much higher than even the Supreme Court, to which appeals lie from the Federal Shariat Court. So then there are judgments of this honorable court that if there's a conflict between a substantive provision and has to be- provision of the Federal Shariat Court, then those substantive provisions will prevail, sir. Thank So that is also a judgment of this honorable court on this field. That constitutional provision will be higher pedestal than the provisions under the Federal Shariat Court chapter, sir. Thank you. Ji, my lord. So my submission is that I was coming to that the jurisdiction aspect, sir. Jurisdiction aspect is that, yes, Article 175 gives the Parliament the jurisdiction to make law, but that law has to be read with Article 142A, which I read to your lordship, sir, and entry 55, sir. 191 confer jurisdiction or does it confer power? I'd say it confers power, sir, because it says it regulated. The most important word is that the rule make it regulate the procedure, practice and procedure. What is the meaning of regulate? 91 is not a jurisdiction conferring article. It is conferring power. Conferring Ji, article. ji. And there is a distinction between jurisdiction And power. And that has been very elaborately dealt with by this honorable court in Ziaur Rahman's case, sir. PLD 1973, Supreme Court, page 49, and the relevant portion is, okay, what is the difference between judicial power and jurisdiction, sir? PLD 73? 3 Supreme Court, page 49, sir. And I'll give you lordship the citation. तुमने बनाया हुआ है? दो रेलिवेंट पेज कौन सा अभी सर? सर सॉरी मेरी किताब जरा मुझे नहीं मिल रही, लेकिन 73 सुप्रीम कोर्ट पेज 49 विद अ बिट डिले बट जस्ट हम पढ़ लेंगे बाद में, अगर आपको नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. My lord, and the relevant portion, my lord, will find at page 69, sir. It refers to 68, the case of Fazlul Qadir Chaudhary, sir. Last paragraph. Para 69, sir. And it says this, the whole page. Para 69? The page 69, my lord. जी. जी. कहाँ से पढ़ें? जी. कौन सा पैराग्राफ? जी, para D, जहाँ parenthesis D, paragraph से, what the Honorable Supreme Court was saying. So far, therefore, as this court is concerned, it has never claimed to be above the Constitution, nor to have the right to strike down any provision of the Constitution. It has accepted the position that it is a creature of the Constitution, that it derives its power and jurisdiction from the Constitution, and that it will even confine itself within the limits set by the Constitution, which it has taken oath to protect and preserve. But it does not claim that, and has always claimed that it has the right to interpret the Constitution and to say to what a particular provision of the Constitution means or does not mean, even if that particular provision is a provision seeking to oust the jurisdiction of this court. This is the right which requires not dehose the Constitution by virtue of the fact that it is a superior court set up by the Constitution itself. It is not necessary for this purpose to invoke any divine or supernatural right, but this judicial power is inherent in the court itself. It flows from the fact that it is a constitutional court and can only be taken away by abolishing the court itself. In saying, however, I should make it clear that I am making a distinction between judicial power and jurisdiction. In a system where there is trichotomy of sovereign powers, then ex necessity derive from the very nature
of things, the judicial power must be vested in the judiciary. But what is this judicial power? Judicial power has been defined in corpus juris secundum. The judiciary or judicial department is a branch of government, and it is that branch thereof which is intended to interpret, construct, apply the law, or the department of government which is charged with the declaration of what the law is, and its construction so far as it is written law. This power, it is said, is inherent in the judiciary by reason of the system of division of powers itself, under which, as Chief Justice Marshall put it, the legislature makes the executive execute and judiciary construes the law. Thus, the determination of what the existing law is in relation to something already done or happened is the function of judiciary, while the predetermination of the law shall be for the regulation of all future cases falling under its provision is the function of legislature. It may well be then asked at this stage as to what is meant by jurisdiction. How does it differ from judicial power? Apart from setting up the organs of the constitution, may well provide for a great many things, such as the subjects in respect of which that power may be exercised and the manner of the exercise of that power. Thus, it may provide that the courts set up will exercise revisional or appellate powers, or only act as a court of secession, or only constitutional issues. It may demarcate the territories in which a particular court shall function, over which its writs shall run. It may specify the person in respect of whom the judicial power to hear and determine will be exercisable. These are all the matters which are commonly comprised in what is called the jurisdiction of the court. It expresses the concept of the particular rest or subject matter over which the judicial power is to be exercised and the manner of its exercise. Jurisdiction is therefore right to adjudicate concerning a particular subject matter in a given case, as also the authority to exercise in a particular manner the judicial power vested in the court. In exercising this power, judiciary claims no supremacy over other organs of the government, but acts only as the administrator of the public will. Even when it declares a legislative measure unconstitutional void, it does not do so because the judicial power is superior in degree or dignity to the legislative power, but because the Constitution has vested it with the power to declare law is in the cases which come before it. It thus merely enforces the Constitution as a paramount law whenever a legislative enactment comes into conflict with it, because it is a duty to see that the Constitution prevails. It is only when the legislature fails to keep within its own constitutional limits, the judiciary steps in to enforce compliance with the Constitution. This is no doubt a delicate task, as pointed out in the case of Fazl Qadir Chaudhry versus Shah Nawaz, which has to be performed with great circumstance. It has nevertheless to be performed as sacred constitutional duty when other state functionaries disregard the limitation imposed upon them or claim to exercise power which the people have been careful to withhold from them, sir. So this is the difference between jurisdiction and judicial power. The power exercised under 191 is a constitutional power vesting in this court to regulate the practice and procedure of the court. And Parliament cannot interfere in that because it's exclusively given. If it was, then I have said, until the Parliament makes the law, the Supreme Court can make the rules of procedure, etc. These kind of words were not used. Where the Constitution specifically uses these words, then the law is being given. But when it says subject to, that is implying there's not an enabling provision, it's a restrictive provision. This is my humble submission. As my Lord, anything else? Mr. Zubairi, the similar principle was reiterated in Sharif Afridi's case? That was regarding independence of judiciary, and that was separation of judiciary, PLD 94, Supreme Court, page 105. Added note by Salim Akhtar. Ji, sir. Yes. Ji. And it was coming from a larger bench of the Sindh High Court, 89 Karachi, page 404. That judgment was upheld, authored by my Lord Ajmal Miazi then was, sir. My Lord. Yeah, I think if you argue in context of Pakistan and what's happening and why presumably the legislator enacted this. I understand, sir. No, you're not. Now let me pose a certain queries to you. This, they are giving a right of appeal. Now we're talking about the right of appeal under 184(3). My Lord. Correct? Yes, my Lord. अब 184(3) में जो हक दिया गया है अपील का, आपने बिल्कुल ये बात नहीं करेंगे कि 184 कैसे इस्तेमाल किया गया है। ठीक सर। ठीक है, या तो कहिए बिल्कुल सही इस्तेमाल हो रहा है, या कहिए बिल्कुल गलत हो रहा है, या कहिए कभी सही हो रहा है कभी गलत। कुछ तो बयान कीजिए ना, क्योंकि आप तो हमारे सामने पिटिशन नहीं लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा है आपकी एंग्जाइटी क्या है इस लॉ से। वजाहत से बात कर दें तो हम समझ जाएंगे। अब सवाल अभी तक आया नहीं है। 184(3) जो है ना का इस्तेमाल कैसे हुआ है पाकिस्तान में, हकीकत क्या है? ह्यूमन राइट्स सेल, कोई रूल में उसका तस्करा है बताइए, है किसी कानून में तस्करा है बताइए, है। अभी तो हम चलें पार्लियामान को तो छोड़ दें, हमारे अपने रूल्स में उसका तस्करा है।
अब 184(3) जहाँ तक हेबस कॉर्पस की बात है उसका तो रूल में तस्करा है, मगर जो दूसरे इख्तियारात इस्तेमाल किए गए हैं 184(3) के तहत, उनका रूलों में तस्करा था नहीं था, कैसे इस्तेमाल किया गया। और अगर आप कहते हैं कि रूल की भी ज़रूरत नहीं उधर, अब तो हम रूल से भी चले गए ना। 191 ये तो नहीं देता है इजाज़त के चीफ बना सकता है रूल, या ह्यूमन राइट्स सेल बना सकता है, या तो क्या ये है। तो वहाँ तो आप अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, उसमें चलें। यहाँ तक बात मान लेते हैं कि अगर 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई होती, फिर आपकी बात में वजन होता कि भाई शीरी के 184(3) में ह्यूमन राइट्स सेल बन गई है तो उसके तहत कर लिया है, सही किया गलत किया तो बात की बात है। तो वो बातों को तो आप बिल्कुल नज़रअंदाज करना चाहते हैं कि 184(3) में, अब देखिए इससे पहले कि दुनिया हम उंगली उठाए, मैं अपने ऊपर उंगली रखता हूँ कि 184(3) का इख्तियार जो इस्तेमाल किया गया है, और हज़ारों केसेस में कुछ केसेस की नौयत थी कि बिल्कुल वो एक जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के आप मैटर में आप ला सकते हैं उनको, कुछ थे बिल्कुल पर्सनल हो गए थे केसेस, ठीक है। पहले आप हमें उस पर तो कोई तशरीह कर ही नहीं रहे हैं, आप बता ही नहीं रहे कि कौन से रूल्स के तहत कर रहे थे। अब आप कह रहे हैं चलें खैर, सुप्रीम कोर्ट ने गलत नहीं, सुप्रीम कोर्ट के एक चीफ जस्टिस ने अगर गलत किया तो पार्लियामेंट को तो ये गलती नहीं करना चाहिए। तो कम से कम वहाँ ज़्यादा वजन नहीं होगा कि वो तो कम से कम कानून के मुताबिक एक चीज़ करना चाह रहे हैं। यहाँ ये 184(3) का इख्तियार कैसे इस्तेमाल हुआ, भाई ये हकीकत है पाकिस्तान की। आप न्यू जर्सी ना जाइए, आप पाकिस्तान में रहिए और यहीं की बातें थोड़ी हम लोग कर लें। कैसे इख्तियार हुआ बता दें, ये आप बिल्कुल तरीक़ेकार से, फिर बात सही है। अगर आप कहते हैं नहीं था तो फिर आप उसकी रेमेडी, अगर एक गलती होगी फिर उसकी रेमेडी तलाश करना किसकी जिम्मेदारी है? सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस अदालत की है, इसके बाद शायद पार्लियामेंट की पड़ती है। अगर हमने गलती की हमें दुरुस्त करना चाहिए, अगर पार्लियामेंट ने गलती की है तो पार्लियामेंट को दुरुस्त करना चाहिए। अगर हम अपनी गलती नहीं दुरुस्त करते हैं तो पार्लियामेंट क्या कर सकती है या नहीं। आप बस सिर्फ उस बात पे खड़े हुए हैं, मगर जितनी वो जो पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है उसको वो नज़रअंदाज करें, चाहे वो प्राइस शुगर का तयन कर ले या कोई और बातों का कर ले, फिर वहाँ तो रूल्स बना लेते। एक ऑर्डर था मेरा कि भाई चलें रूल्स बना लें, फिर इसको हम कर लेते हैं। तो वहाँ तो आप जा ही नहीं रहे हैं। तो आपका जो कंडक्ट आ जाता है क्वेश्चन में कि आप एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या पीटीआई को नहीं कर रहे हैं। नो सर, आप किसको कर रहे हैं? ऑन नोटिस एज प्रेसिडेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, आप सुप्रीम कोर्ट को कर रहे हैं। जी, अच्छा, तो आपने वजाहत नहीं की कि आप किसके लिए कर रहे हैं। चलिए खैर ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का हमें बताएं ना मौक़िफ़ क्या। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का मौक़िफ़ क्या है कि 184(3) जैसे इस्तेमाल हो रहा था सही हो रहा था, तो फिर बता दीजिए ना। अगर हम अगर हम इस कानून को ख़त्म कर देते हैं, कलकदम कर देते हैं, तो कल मैं उसका इस्तेमाल वैसे ही करता रहूं जैसे पहले हो रहा था, वो सही होगा? इसका जवाब दे दीजिएगा। सब बिल्कुल मैं आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात। मैंने कोई ये पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दिया, मैं आपका समझना चाह रहा हूँ। मेरे मुंह ना कहिए कि मेरा मौक़िफ़ है ये। सर आपका मौक़िफ़ तो हम सुन चुके हैं कि आपने नहीं, मेरा मौक़िफ़ नहीं है। आपने कहा कि जी आप अपनी पावर्स गिव अप करना चाहते हैं, आपने कहा। नहीं, ये वो अलग बात है। ये अभी बात हो रही है 184(3) की, प्रोसीजर वाली बात अलग है, वहाँ पावर की बात। पहले मैं पूछा, अभी तो यहाँ 184 पे तो आया ही नहीं था। मैं आप 175 की जो बात हो रही है तो 184 में तो फिर आप सवाल हो गए, तो मुझे आने तो दें 184 पे। उस पर आप कब आएंगे? 10:30 बज गए सर। आप 11:30 तक से पहले मैं इंशाल्लाह खत्म कर लूंगा। लेकिन आपको नहीं 11:30 कहा था, सबको कहा था। अच्छा सर, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा हूँ कि 184(3) पे तो भी आया नहीं था, लेकिन बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ इस बात से कि 184(3) का गलत इस्तेमाल भी हुआ है। उस पर बहुत चीज़ें जिस पे बहुत सवालात उठे, लेकिन पॉइंट इज दैट बात मैं जो आर्ग्यू कर रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, आप एक फलसफाई बात कर रहे हैं। नहीं सर, हकीकत में वो नहीं है। पहले मुझसे पूछा कि सही इस्तेमाल हुआ गलत, मैं उसका जवाब नहीं, तो फिर उसका हल भी बता दें। हल आ रहा हूँ ना सर, पहले बात बता रहा हूँ जो आपने मुझसे सवाल किया, उस पर हल की तरफ आ रहा हूँ। मैं जो अर्ज कर रहा हूँ कि सर इसका सही इस्तेमाल हुआ गलत इस्तेमाल हुआ, देखना आपको ये है कि कॉम्पिटेंस किसकी है इसको सही करने की, जुरिसडिक्शन किसकी है। नहीं, आप देखिए ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने अब अपनी जिम्मेदारी एकदम हम पे डाल दी। नहीं, मैं आपकी राय पूछ रहा हूँ, तो आपने कहा देखना आपको है, आपकी कोई राय है, आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी बॉडी हैं वकीलों की, तो बताइए ना, अपनी राय बताइए। जी आबिद जुबैरी साहब। जी सर, इसी टेक्स्ट में अगर जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है एग्जिस्टिंग, उसके तहत से 184(3) को ले, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, इट हैज़ द इफेक्ट ऑफ वायलेटिंग द फंडामेंटल राइट्स, क्या पार्लियामेंट जिसके पास वैसे इख्तियार है कि वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को इनलार्ज भी कर सकता है
और सप्लीमेंटल पावर्स भी कन्फर कर सकते हैं। क्या वो फंडामेंटल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेस टू जस्टिस के कॉन्टेक्स्ट में, इज इट bereft ऑफ jurisdiction? अगर सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स के तहत उसका इफेक्ट ये हो कि फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, सब एक्सेस टू जस्टिस, बिल्कुल सही सर। प्रैक्टिस मैं 184(3) की बात नहीं कर रहा, आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर you had, I think, come on track. जी, And I had said this in the first hearing. It is not a question of good, bad, it is for competence, sir. It is the question of competence. Who is there to correct it, or who has to here to make the law? A law जी. may be a very good law, Yes. but if somebody who is not competent to make it, जी, it is in conflict with the constitutional powers, जिधर trichotomy of powers हैं। आप हमें ये कॉम्पिटेंस पे बताइए कि ये किसकी कॉम्पिटेंस? वो तो बात हम समझ गए आपकी, मैंने आपका मौक़िफ़ ये है, वो तो बात समझ गए, मगर मेरा सवाल इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको नजरअंदाज कर लें सिर्फ कॉम्पिटेंस पे, तो वो आप बता दीजिए, उस पे तो आपको हम सुनना चाहते हैं आपकी राय। अपील के ऊपर आ रहा हूँ, लेकिन पहले मैं जज साहब का सवाल दे दूँ। अतर मिनल्लाह साहब ने जो पूछा, माय लॉर्ड, माय आंसर इज दैट इट्स नॉट अ मैटर ऑफ गुड और बैड और गलती, इट इज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटेंस। My Lord has to see, this court has to see whether they had the competence to even correct that thing by making this law. Then you have not crossed the first hurdle. There's a presumption of constitutionality. जी, आपने एक लॉ चैलेंज किया है जी, उसके रिपटल के लिए आपने ना स्टैंडिंग बताया है, ना 184(3) के तहत सर मैं अभी तक ये बता सकते हैं आप कौन सा फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं। आप उस मेंटेनेबिलिटी को भी नहीं क्रॉस सर मैं हम सबमिट एक एब्स्ट्रैक्ट में जी, वी आर सब 191 के पहले देखें, आपसे मैंने सिंपल एक सवाल ये पूछा है, jurisdiction of this court is not just आपसे सिंपल मैंने एक सवाल पूछा है जी, एक्सेस टू जस्टिस जो है वो डिनाई हो रहा हो, ये सुप्रीम कोर्ट डिनाई कर रही हो जी, फंडामेंटल राइट्स वायलेट कर रही हो, कैन द पार्लियामेंट नॉट legislate? My humble submission, no, they cannot. If the court is violating any of the rules or the constitution, then case should be brought before the before the Supreme Court to challenge that thing. That is the way to challenge the law. Any rule made by the Supreme Court, Parliament cannot make. अब मेरे सवाल का भी थोड़ा जवाब मुझे ये बताइए आबिद साहब जी, the Chief Justice exercised his powers under before law by fixing these petitions. Why not more important petitions like enforced disappearances, other human rights issues? Now, that is a question which the Parliament wanted to address. Why should these cases have been taken first? Why not other most important cases? My humble submission is practice and procedure. Only the power to regulate the practice and procedure rule making vests in the court. It does not vest in the Parliament to make the practice and procedure, even if there was something. ये बात आप कर चुके हैं, नई बात कर देना, सवाल जवाब देना। And the law can be challenged on two grounds: that violates fundamental rights or is in violation of some constitutional provision. That is the jurisdiction of this honourable court, not just the violation of the fundamental right, but if the law itself is in violation of some constitutional provision, that can be struck down by this court. So that is the jurisdiction of this court. That is under अब आप बताएंगे मेरे सवाल, अब आप आबिद साहब, अब मेरे बात की High Court has also jurisdiction under 199. तो मैं लिखूं, मैं अपना लिख देता हूं, it was put to him and he is not answering Sir, it. I'm coming, but my lords, आप पहले एक वन बाय वन कर दीजिए। अच्छा, बहुत बेहतर सर जी। अच्छा, 184(3) पढ़ें सर पहले प्लीज। नहीं, मुझे मैंने जो बात की वो पढ़ तो 100 दफा लिया है, मैंने जो आपको बातें बताई उसका जवाब, आपकी राय क्या है? मेरी राय ये है कि जी अपील का हमारी स्टैंड भी है, का राइट होना चाहिए, बट इट हैज टू बी गिवन थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल। मैं ये बात नहीं की थी, मैंने कहा जितना इस्तेमाल हुआ सब सही हुआ। मैंने जवाब दिया, आपने कहा मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, अगर नहीं भी हुआ है सही, अगर पूछ रहा हूँ, आपकी कोई राय नहीं है प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सही भी हुआ है गलत भी हुआ है, नहीं, दैट्स भी अपील होनी चाहिए। मैं कहता हूँ आप ये मैं पूछ रहा हूँ आपकी राय में, इन योर पर्सनल ओपिनियन, अगर मगर ना करें, सीधी बात करें ना, आपके यहाँ हुआ है, सारे सही हुए। मैं कह रहा हूँ कि दोनों अच्छा भी हुआ है गलत भी हुआ है, जी मेरा ये, और ये मैं आपसे आपके सवाल का जवाब। ठीक है, अच्छा अब आप दूसरा सवाल सुन लीजिए। आपका ये कहना है कि तरीक़ेकार गलत है, यही आपका आर्ग्यूमेंट है ना? ये राइट देना चाहिए मगर आइन को तरमीम लाने के लिए, ये आपका बिल्कुल मौक़िफ़ है जी। अच्छा अब सुनिए, क्योंकि जुरिस्डिक्शन ना हम बढ़ा सकते हैं और ना पार्लियामान बढ़ा सकती है,
हम ये केस सुन कैसे रहे हैं फिर? जी हम 184(3) में सुन रहे हैं ना एक केस। जी हमने जुरिस्डिक्शन बढ़ा दी जी। या क्या ये नहीं बढ़ाई? क्योंकि जुरिस्डिक्शन कर्टेल्ड है 184(3) में। दो बातें, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अब कौन सी फंडामेंटल राइट इन्फोर्स कर रहे हैं? आप कह रहे हैं यहाँ बढ़ा दीजिए मगर वहां ना बढ़ाइए, तो यहाँ अब ये हम केस सुनने से ही अपनी जुरिस्डिक्शन बढ़ा रहे हैं। नहीं सर, आपने ये आपका मौक़िफ़ होगा? आपकी सारी जजमेंट्स जो है मैं आपसे अब सवाल पूछ रहा हूं, मैं जवाब दे रहा हूं, जजमेंट का ना सवाल है, आपकी बात बताएं। 184(3) के अंदर फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन भी सुप्रीम कोर्ट मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, और अगर कोई कानून मुकन्नना बनाती है तो उसके ऊपर डिक्लेयर करना कि वो कानून आइन के मुतसादिम है, वो भी आपका हक है अंडर 184(3). अच्छा, जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में, फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में जब भी कोई अमेंडमेंट आ जाए तो सीधा सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत हो सकता है, आपका कहना ये? बिल्कुल हो सकता है, इफ माय लॉर्ड। ठीक है, ये मैंने नोट कर लिया। बिल्कुल करें सर, इवन इफ इट्स नो फंडामेंटल राइट इज इन्वॉल्व। नहीं, फंडामेंटल राइट्स हो सकता है, लेकिन टैक्सेशन मैटर में वन फंडामेंटल राइट होती है। कोई अमेंडमेंट भी चैलेंज हो सकती है, वहां भी हो सकता है, लेकिन पब्लिक इंपॉर्टेंस का इशू आता है सर। व्हाट इज द मैटर? देखिए, दो कंडीशंस होती है ना सर, पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड फंडामेंटल राइट्स। इट्स नॉट आइदर और, इट इज बोथ साइमल्टेनियसली। वही मैं कह रहा हूं कि आप दोनों चीजों को देखना होगा, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स को नहीं देखना होगा आपको। तो ये केस में क्या फंडामेंटल राइट है, बताइए ना हमें। इसमें फंडामेंटल टू जस्टिस का माय लॉर्ड वाज सेइंग कि कौन सा आर्टिकल बता दें, वो वाला आर्टिकल सर। आर्टिकल राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ में होल्ड किया गया है कि जी, होल्ड नहीं किया गया, उसके लफ्ज में बता दें कौन से में आता है तो मैं लिख लूं। जी, एक्सेस टू जस्टिस एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इज बीन हेल्ड टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द वर्ड्स ऑफ आर्टिकल 9 सर। तो आप लिटरल रीडिंग में तो नहीं है, इंटरप्रिटेशन। अच्छा, लिटरल में नहीं है ना, तो ये तस्लीम आप करते हैं, लिटरल में नहीं है, इंप्लाइड रीडिंग में है। नहीं, जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल व्हिच इज बाइंडिंग is says के जी access to justice in high court binding, it may be binding on you, not on us. Sir, in high court bar का जो फैसला है 2009 सुप्रीम कोर्ट 879, it is a full court फैसला, उसके अंदर लिखा हुआ है कि जी आर्टिकल 9 की वायलेशन में access to justice independence। चलिए ठीक है, मेरा सवाल का जवाब मिल गया मुझे। आप आगे बढ़िए, आप आगे बढ़े। हाँ, मेरे साहब ये बता दें कि आप कह रहे हैं एक्सेस टू जस्टिस की बात है, सिटीजन एट लार्ज की बात है, इस एक्ट के तहत वो कौन सी कोई ऐसी प्रोविजन में है जो पब्लिक को डिबार करती है टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट? ऐसे कोई प्रोविजन है जो कह सके कि इसमें जो बात है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, वी हैव अ वेस्टेड इंटरेस्ट इन द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इफ दिस लॉ, इसमें अच्छा लॉ होगा, बहुत अच्छा लॉ होगा, लेकिन इशू ये है कि इट इज द कॉम्पिटेंस। अगर कॉम्पिटेंस नहीं थी देन इट्स नॉट अ राइट लॉ, इट इज अल्ट्रा वायरस। मेंटेनेबिलिटी की बात कर रहा हूँ। इस एक्ट को देखने के लिए हमने ये देखना है कि आया इसकी प्रोविजन या टोटल एक्ट किसी भी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, या इसके जरिए कोई पब्लिक या किसी सिटीजन का हक मारा जा रहा है कि उसे पहले तो अपील की हक थी, अब नहीं दिया जा रहा है, पहले ट्रायल की हक थी, अब नहीं दिया जा रहा है। ऐसी कोई प्रोविजन इसमें है कि हम कह सके कि ये इलीगल? सर, मैं कह रहा हूँ इसकी प्रोविजन आपको ये देखनी है कि क्या ये कानून साजी हो सकती है। जवाब दें उसके बाद पहले। मैं आ रहा हूँ सर, मैं आपको जवाब ही दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि इसमें ये देखना होगा कि क्या कानून साजी का इख्तियार था के पास टू मेक दिस लॉ। चलिए इसमें बता दो, आपने पहले कहा कि 1980 में रूल्स बने जी, वो रूल एग्जिस्टिंग लॉ के तहत बने जी, ये तो आप मानते हैं कि रूल लॉ के तहत बनने चाहिए जी, तो क्या आप रूल बने 191 के तहत सर, 191 आर्टिकल रूल लॉ के तहत। आपने थोड़ी देर पहले जो आर्गुमेंट से आपने कहा कि एग्जिस्टिंग लॉज के मुताबिक 1980 में रूल जी, बिल्कुल एग्जिस्टिंग लॉ। प्लीज मुझे ये बता दें, मेरी नजर से तो नहीं गुजरे, 1980 में उस वक्त कोई ऐसा कानून था जो सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस को नहीं फॉलो करा? बिल्कुल नहीं तो ये रूल कैसे बने अंडर 191? 56 के बने, पहले बने 1956 में। लॉ कहाँ गया सर? लॉ, अगर कोई लॉ है, वर्ड यूजेस सब्जेक्ट टू लॉ। सब्जेक्ट टू लॉ मींस कि कोई लॉ अगर होता, कोई भी लॉ हो, इट कैन बी एनी लॉ, सब्सटेंटिव लॉ। आई थिंक वो 191 वाला आर्ग्यू आप कर चुके थे, जब आप 175 पे थे। लॉ कोई था जिसके वायलेशन में नहीं बन सकते थे, ये मेरे हम्बल सबमिशन थी। ठीक ठीक ठीक, तो ये लॉ प्रोसीजर। अगला पॉइंट बताएं। अगर कोई होता, if I may ask you a question, the equivalent to Article 184(3) of our Constitution, I think, is Article 32 of the Indian Constitution. जी माय लॉर्ड, which guarantees the right to move the Supreme Court for violation of fundamental rights. If memory serves me right, Mr. Ambedkar, who is regarded as the father of the Indian Constitution, in relation to this jurisdiction conferred on the Supreme Court, said it is the very soul of the Constitution. जी। Now, if that is correct, and in India no one has ever doubted that that is correct, we are here talking of the very soul of the Constitution. Yes. And it seems to me that, and
this is my question to you, that can a challenge to a law which, according to you, whether right or wrong, that's yet to be decided, that is an assault on the independence of the judiciary. Is that not an assault on the very soul of the Constitution? Of course, because Can it be therefore put to one side simply by saying that it is not in violation of fundamental rights? no, because This my is humble the- submission is that this is what my humble submission is, that the very purpose this law, and I read that judgments, that it affects the separation of doctrine of separation of powers. My law, this court has the exclusive jurisdiction. ये point आप repeat करते रह रहे हैं, अगला point and that's बताइए. why if any law which is made in violation of that cannot be, that affects the even the Okay, let's fundamental get on, rights of the get people on of with it, Pakistan and Mr. access to Zubairi. justice. Next point पे आ जाए. 184 की जो power, that's the original power of this court. There's appellate power is 185, sir. Advisory power is 186. Review power is 188. These are the four powers which are given by the Constitution. No, you are wrong. There are other powers also. I'm talking about these are the appellate में इनकी बात कर रहा हूँ, चार powers की जो दी हुई है. Now, the original framing में appeal का right नहीं था. Appeal is only provided under Article 185. Now, if you want to give an appeal, my humble submission is that you have to amend the Constitution. And why? Because section आप पढ़ेंगे sir, Article 175, 142 देखा. अब entry 55 देख लें sir. What does entry 55? पढ़ें. जी. My lord, 175(2), Article हाँ, 142A and पढ़िए. entry 55 have to be read together, not in पढ़ने 55 से कहाँ से शुरू करना चाहते हैं? jurisdiction powers all courts except the Supreme Court with respect to any of the matters list and to such. Now, I'm coming to emphasize on this last part, sir, the second part of this entry. And to such extent as expressly authorized by or under the Constitution. Now, these are very important words, and my lord, I'll keep that my lord's thing. And by or under the Constitution, the enlargement of the jurisdiction Supreme Court and conferring thereon of supplemental powers, sir. The point is that the thing, पिछले जो आपके जो list थी, उसके अंदर ये words नहीं थे. In the 56 Constitution, 62 and 72, expressly authorized by. पढ़ लिए, अब आप argument develop करें. Argument is that when you read all these provisions together, no court shall have jurisdiction except provided by Constitution or law. The 142, जो Parliament can make laws in regard for. यहाँ increase की जो बात हो रही है, उस पे मैं सिर्फ एक पैराग्राफ जजमेंट. इसके power increase हो रहे हैं. On the Supreme Court की power, यहाँ आप इसमें आप कह रहे हैं ये independence judiciary खत्म हो रही है क्योंकि power increase हो रहे हैं. Sir, it is the method, the methodology. फिर वो method वाला argument खत्म हो गया नहीं सर, इसमें यही है अब आप दूसरा आपकी ओरिजिनल jurisdiction के अंदर अपील नहीं provided थी on the original framers of the Constitution. They did not provide. Only the appeal was. मगर मैं फिर उसका काउंटर आर्गुमेंट ये भी दे सकता हूँ कि 184(3) का इस्तेमाल जिस तरीके से किया गया नहीं. देखिए ये आप नो सॉरी टू से इफ समबडी albeit a person not even fully authorized is doing something to help the nation, help the Supreme Court, you should say strike down because they're not following some perceived letter of the Constitution. That will be a stretch. If this power had been given to the Federal Shariat Court, if it had been given to some secretary in the government or to the parliament even, then you could say, yes, we एक appeal दे दी. In a fit of rage, a judge says, so and so political party, I hereby ban it. खत्म. कोई solution नहीं है इसका, except review, right? No, in a fit of rage, या आपकी बात किसी को पसंद नहीं आई या कुछ मिसगी हो गई, हो जाते हैं, इंसान दोनों तरफ होते हैं. तो हम यहाँ बंद करके वो फरिश्ते नहीं बनते, हम इंसानी रहते हैं. फिट ऑफ रेज में उन्होंने कर दिया ये, तो कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं. मैं कहता हूँ आप बिल्कुल होनी चाहिए राइट ऑफ अपील, बिल्कुल होनी चाहिए. इट्स ओनली द मेथड, बिल्कुल होनी चाहिए. मेथड आप मेथड विल नॉट. आपको हमें तो हम कॉन्स्टिट्यूशन पे चले. इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन द इट्स लाइक अ पेशेंट डाइंग ऑन. सुन लीजिए, पेशेंट डाइंग समवेयर, अ पर्सन रिसीव्ड अ गन शॉट वुंड इन लाइंग समवेयर ऑन द स्ट्रीट. ठीक है. Now, someone is not a doctor, but knows a little bit of medicine. He does something, tries to press him thing. Ideally, it should be performed by the doctor. So he said, no, don't do it. Wait for the water to come. Wait for him to die. And he, of course, he's not a doctor. He may be a quack, or he may just have seen some television shows, and he may just be applying some first aid, medical trade, who's not a doctor at all, not even a nurse, to save the person. So, इसमें ये बात हमें बिल्कुल इसको कर दें. इसका आप फिर शुरू में तो आप लोगों ने अटैक कर दिया था इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट पे, तो मैं तो कह रहा हूँ इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट इज गुड.
तो मैंने इंटेंट ऑफ पार्लियामेंट को नहीं नहीं, किया। इस साइड से लोगों ने किया है, जी, उन्होंने लोगों कहा ने किया, कि मैंने नहीं पर्सन किया। मैं स्पेसिफिक कहता लॉ हूँ, है, जी, हमें बता दें पर्सन Parliament स्पेसिफिक कैसे है। cannot be debated here. I तो you never are- said that. you I are- said that this law may be one of the good laws. But the point is that the way it has been done is unconstitutional. That is my case before your lordship, my humble submission. और देखिए आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी The question is where the constitution has put up a scheme of separation of powers as to who can do what. There is a reason, there is a rationale, and there is a philosophy behind it which has been developed over centuries of jurisprudence. If we open the door, and this is a question of opening the door, we open the door for the Parliament to interfere in every matter that the Supreme Court may or may not take up, then there is no end to it. There would be good legislation and there would be bad legislation. How do you differentiate? The differentiation is put in the Constitution by the framers. This is what you can do and this is what you cannot do. Yes. Whether you want to do something good, if the Constitution prohibits you to do it, and the Constitution does not totally prohibit you. It says if there is something which should be in the Constitution is not immune from being amended to do that good. Yes. But to confer this power on the Parliament and say whatever you do, even if it is beyond the Constitution, if it is good, it's good. Yes. That is not how constitutions work. Yes. My humble जी जी देखिए इसमें एक सेकंड ठहरिए ना, ये जो रैशनल जो है हमारे रैशनल और रीजन और फिलॉसफी जो होती है, we tend to forget when there's trampling of boots. Then all these things, nice philosophies go out the window. The only difference between a constitutional amendment and a law, the only difference is a numbers game. Do you have 2/3 majority? It's the very same persons doing the lawmaking, the same parliamentarians who are making law. It's no difference, it's just a question of numbers. Suppose a political party comes to power, on the pledge, they're going to provide 184.3. They win the election. They don't have the numbers for 2/3 majority. So they are helpless. Even though it was a pledge to the nation, we'll go, the first thing we're going to do is do this. So at the end of the day, it's a numbers game. But if it's a numbers game, then we should also realize the traumatic history of Pakistan. Irrespective of numbers, irrespective of the entire nation, one person comes and then parliament is held at whatever it is held at, and 269, 270, 270 AA, and everything is done is all right. It's a post-rubber stamp, done illegally, endorsed by Parliament by amendment to the Constitution. That's all right. We forgo the history. Bhai, America mein ye cheezein nahi hoti. When we are so particular about the full stops and the commas, then we should also say it has not yet happened in America. It may happen tomorrow. It has not yet happened in the UK other than Cromwell. So we should not forget. We should keep in mind the history of the nation also, which is a very fragile history. It's half a country today because of these acts. So let's not cripple the parliament completely when they are doing good because they don't have the numbers 2/3 majority. That's all the argument is left with. 2/3 से कर लें, ठीक है. आपका एक वोट कम है, आप नहीं कर सकते हो. That's what it boils down to that. Sir, my lord, to defend, protect, and preserve the constitution. If the or the people of Pakistan. If that is the thing, then फिर हम आपसे वही सवाल पूछेंगे कितने लोगों ने किया है इसको. Then constitution gives a mechanism, a procedure. You can, my lord, with utmost respect, it is not a numbers game. It is a constitution put. The framers said that if a constitutional amendment has to be made for the people of Pakistan, because they are representing where the independent judiciary will be fully secured, then you have the number games. नहीं, it is the constitutional requirement. आप तो हैं सिर्फ आप सिर्फ You were not agitated enough either to vote in to have filed your own petition. You have filed your own petition. No, or sir. you're on notice. Notice, sir. Okay, so you were not agitated enough to have filed your own petition. Okay, some people came and filed their own petition. So if you were so agitated, you should have done it the very first day yourself. The Supreme Court, it would have been very nice to see Supreme Court Bar Association. जो cases file किए वो तो take up नहीं हो रहे जो Supreme Court bar वो क्यों नहीं हो रहे take up? क्योंकि आप ये केस को खत्म ही नहीं करना चाहते.
बात नहीं है सर, खत्म करें। बात Mr. जी Zuberi, Constitution election says- petition pending The है। Constitution 184(3). the Constitution says we, The people of ये excuse me जरा हमें भी give question करने का time ourselves- दिया जाए. give ourselves After it. the following Constitution. जी Now, the people of Pakistan have said, if we want to amend the Constitution, जी we We- would do it through our चलिए ठीक है, ये representatives. आर्गुमेंट हो गया, आगे बढ़ते हैं। हाँ। जी चलिए ठीक है, समझ two-thirds, गए sir। 3/4 का आर्गुमेंट। चलें चल आगे two-thirds, बढ़ें। sir। हाँ। Mr. Zuberi, क्या मैं सवाल कर सकती हूँ? Excuse me. जी पूछिए जैसे My lord, जी, the act says that subject to constitution and law, they have amended either taken the power of the Supreme Court by making rules. So what article of the constitution they have referred to? They have referred to. they have referred to Amendment has been made. जी। We are opening the doors जी बिल्कुल सही। in future for amending the constitution. My humble submission is Article simple majority. 175(2) has been read in isolation to amend this law. Basically, an amendment has been done in the Constitution by amended by 175(2). And my humble submission is 175(2) cannot be read in isolation. It has to be read with Article 142A and Anti-55. अगला point बताएं, जी, एक note point हो is with- चुका है। Mr. Zuberi, if I may, Mr. Mr. Zuberi. Zuberi, My lord. Mr. Zuberi, may I ask you and follow up on what my learned colleague has said, that when Constitution is being amended, it is constituent power that is Yes. being exercised. My lord. It is a unique power, quite separate and different from the Legislative. other legislative competence that is available to Parliament. So I think what my learned colleague is saying is, if we open this door जी of an indirect amendment to the Constitution, we are allowing Floodgate. constituent power. It is not a numbers game, if जी, I may yes. say so, with all due respect. जी It is a numbers game because it is constituent power. We are allowing constituent power to flow into a channel which the Constitution prohibits जी directly or indirectly. जी So therefore, I think the point that my learned colleague has made, that this is at most, or at worst perhaps, an indirect amendment of the Constitution, which is perhaps barred by the Constitution itself. Sir, tomorrow if this law नहीं tomorrow नहीं, अभी हम यही देखते हैं। if this नहीं, law अभी- is अब ये upheld, बिल्कुल for हम नहीं example, करेंगे। then the Parliament can No, also no, decide no, that the no, last, no, the junior no, most no, judges will no, no, जी, no. जी Yeah, you cannot, we have a particular case, argue that. What happens tomorrow, I am not one who gives judgments on the basis of surmises. इस पे कर लें, आप बहस खत्म कर लिया, आप वही पॉइंट्स बार बार दोहरा रहे हैं। जरा जल्दी खत्म कर लेना, आपका वक्त निकल जाएगा You दूसरों are का। representing the Supreme Court Bar Association. You're not a petitioner nor respondent. क्या आप ये बेहतर नहीं था कि आप आके कहते हैं कि जनाब इस एक्ट को पेश करने की जरूरत क्यों महसूस हुई? मेरे ख्याल में जरूरत इसलिए महसूस हुई कि हमने 184(3) के पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर इस्तेमाल किए, क्योंकि अगर आप इसकी वर्डिंग पढ़ें उसमें सिंपल बात ये है, फिर से अगर आप पढ़ लें, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 199, द सुप्रीम कोर्ट शैल, if it considers that a question of public importance with reference to the enforcement of any fundamental right conferred by chapter 1 of part 2 is involved. हमने जो ऑर्डर्स किए, हम तो लोगों को सजा भी देते हैं, हम लोगों को बरी भी करते हैं, चीनी की कीमत भी मालूम करते हैं, बहुत सी चीज़ें करते हैं। क्या ये अगर हम अपने इस डोमेन में रहें तो किसी लॉ या रूल की जरूरत पड़ेगी? मेरे ख्याल में नहीं। सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ कि जी ये आप पावर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गलतियां की होंगी, लेकिन पार्लियामेंट उसे सही नहीं कर सकती इस लॉ के थ्रू। दैट इज माय केस। अगर आप करेंगे तो आप खुद करेंगे सर, ये अपने रूल्स में अमेंड करके सर। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर पावर नहीं, आप अपने रेगुलेट करेंगे अपने रूल्स और प्रोसीजर को। गलती अगर आप कहें तो आप उसको करेक्ट करें, आप उसमें रूल्स अपने रूल्स अमेंड करें, उसमें आप अच्छा चलें, आप इस बार you are repeating yourself. अगर हम किसी और को मौका देते हैं, you just repeat. नहीं, you want to can if you're repeating yourself, we'll ask here someone else. 184(3) is original jurisdiction जी। conferred by the Constitution, जी and it is the original jurisdiction. And if appeal is given, that would continuation of the proceeding before the original court. जी This is settled you law. will have a super It is settled Supreme law. Court. जी Any provision of the Constitution where appeal is given by a simple legislative power by the Parliament, that is permissible under the law. No, my lord, under the Constitution it is not, sir. That's my. And may I just
quickly Yeah, take your lordship. Saab, how would you explain enlargement of jurisdiction? Yes, I'm coming to that. And conferring supplemental Yes, my lord. powers. Ji. Because you see, to be interpreted liberally Ji. as already laid down by this court. Number of cases, sir. My lord, humble से एक आप करके फिर खत्म करूँगा. Directly उस पे आ जाए ना. जी. If the parliament is competent to enlarge the jurisdiction and also to confer any supplemental power. Yes, my humble submission is appeal जो पार्लियामेंट ने दे दी इसके अंदर तो कल किसी चीज को भी अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट को दे सकते हैं. नहीं, आप देखें ना, पहले इसको तो जरा रूल 50 कर दीजिएगा. अगर तो वो jurisdiction expand कर सकती है पार्लियामेंट, तो फिर उनका इख्तियार है. नहीं sir, with utmost respect, sir. How do you read? जी, I'm reading. I'll take help from a judgment of this court, 2000 SCMR, page 567, and the relevant portion is at page 617, sir. And let's read this paragraph to answer your lordships and my lords. 2000 SCMR, page 567, Province of Punjab is the National Industrial Cooperative Credit Corporation. इसमें through a provincial law, appeal was provided to the Supreme Court. That was struck down. Though a judge, or cooperative judge, was a judge of the Honorable Supreme Court, that was said that is fine. But when the appeal was granted, it was struck down, and this is what the Honorable Supreme Court had. My lord, kindly see page 617, para 17. Page 6. 617, my lord. Starts at 567 and page 617. And the appeal के बाद may I just read? We lost a page. Coming now to the present Constitution of 1973, it may be of the para 17, sir. It may be observed that according to the Learned Council for the Government of Punjab, in view of Article 175(2) of the Constitution, under which jurisdiction can be conferred on any court, including the Supreme Court, by or under any law, in relation to matters in respect of which provincial legislatures have power to make laws, including cooperative societies, additional supplemental jurisdiction or powers can be conferred on the Supreme Court by provincial legislatures. The law mentioned in Article 170 includes a provincial law and additional supplemental jurisdiction on powers and form an appeal to the Supreme Court under Section 22 of the impunity laws being conferred on the Supreme Court in respect of a matter which the provincial have exclusive jurisdiction under the Constitution to enact laws. Now, since judgment is quoted and the finding of the court at the bottom of the page. In view of, there is no ambiguity interpreting entry 55 of Part 1 of Federal Legislative List 4 Schedule of 73 Constitution. Entry read with Articles 175(2) and 142A of the confers exclusive powers on the Parliament make laws for enlargement of the jurisdiction of the Supreme Court or conferring on its supplementary powers. If entry 50 was not there in the Federal Legislatures, it could be argued that under Article 175(2) of the Constitution, in respect of matters relating to corporate societies exclusively falling under the comprehension of provision, a law can validly be made by a provincial enlarging jurisdiction of Supreme Court and conferring on its supplementary power. But Article 175 is not to be interpreted in isolation. It has to be read and interpreted along with Article 142A and entries in the legislative list. Under entry 55 of the Federal Legislature is competent to make laws regarding jurisdiction. Actually, you're not reading the relevant part. The relevant part are two lines. Ji. The last is 616, the last line pad lijiye, and the two lines following that. That's what is the answer to the question. 616 की last line पढ़िए page पे. Ji, from the aforesaid. From the aforesaid entry, it follows that under the interim constitution, additional supplementary jurisdiction could only be conferred upon by a law made by. Yes, sir, interim constitution. आप पढ़ तो लेना provision तो वही है ना. जी. By a law by the federal legislature. नहीं सर. वहाँ issue सिर्फ इतनी सी थी. जरा समझने की कोशिश करें ना. आप जरा सुन तो लीजिए ना हजूर. वहाँ सिर्फ ये बात उन्होंने कही. जी सूबाई उसको पावर नहीं है और स्पेसिफिकली ये जुमला इस्तेमाल कर दिया फेडरल लेजिस्लेचर कर दे तो वो प्रोविंशियल बात तो हम भी मानते हैं मतलब मैं कम से कम मैं तो बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ इस बात पे उसकी एंटी 55 में एनलार्जमेंट की बात नहीं की हुई थी 72 की आप जुबैर साहब जी इसको पढ़ लूं सर प्लीज आप एक मिनट मैं आपसे इसके 4 लाइनें पढ़ लीजिए उससे पूरा जवाब आ गया इसमें 618 पेज पे आइए आ रहा हूं उसी फर्स्ट पैराग्राफ जी लास्ट 4 लाइंस हाउएवर से पढ़ दीजिए आप सर मैं यहां इसके ऊपर भी बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ दीजिए वो इसका आ रहा हूं जो माय लॉर्ड्स क्वेश्चन वाज अच्छा फिर आप फिर छोड़ दीजिए फिर हम अगर आप समझते हैं आप शाम तक चलाएंगे इस केस को सुबह से आपको दे रहे हैं टाइम दो लाइनें ये हाउएवर से पढ़ दीजिए ना लंबे लंबे पैराग्राफ पढ़ेंगे हां
That is the crux. However से पढ़ दीजिए. However, However, jurisdiction of Supreme Court can be enlarged. Supreme powers can be conferred on Supreme Court by law in view of Article 175(2) of the Constitution, entry 55, read with Article 142. Leave no that the enlargement jurisdiction conferred Supreme powers can only be done through law made by federal. बस ये है सर, लेकिन इसका this is ऊपर the वाला ratio of the judgment. हाँ, ये रेशियो है। बस तो रेशो ऊपर भी है सर। अच्छा अब आप हम आपको खत्म कर रहे हैं। सर एक खत्म हो ही सुन गया। लें सर, एक मिनट। आपने पढ़ा है, दिस इज पढ़ द लें। मेयर रीस्टेटमेंट ऑफ व्हाट इज Straight, ये हम पढ़ लेंगे ना। सर, यार देखिए, ये हमारा सर, तीन काम लाइन है। नहीं, आप हमने बता दिया, हमने नोट कर लिया। जो असल उसका क्रंच वो अच्छा, अगर आप सॉरी टू से, अब हमें एक ही इंप्रेशन मेरे जहन में क्रिएट हो रहा जी। है कि आप चाहते हैं कि 184(3) के केसेस जो लगे हुए लगे नहीं कोर्ट में, क्योंकि मैं आप तो चाहते हैं चाहता कि हूँ खत्म ही लगे, ना हो कभी। सर, मैं लेकिन- तो बस आप खत्म कर दीजिए ना। हमने सर, ये- आपने बता दिया, हम पढ़ लेंगे, मैं शुक्रिया। कह रहा हूँ आइसोलेशन में नहीं पढ़ा अच्छा, जा सकता अब 175 आप कोई और पॉइंट है तो हम सुन के आपको सर, दोबारा नहीं सुन जी, रहे हैं। दूसरा पॉइंट जो है कि जी इसके अंदर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दिया 18 सेक्शन 5 के अंदर कि जितने केसेस हैं वो सब खुल सकते इसमें हैं। पहले जरा क्लैरिफाई कर दीजिएगा जी। ये जो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है ये सिर्फ 184(3) के लिए है। जी। अगर किसी ने 188 के तहत रिव्यू एक्सरसाइज कर ली है उसके लिए नहीं है। देयर इज नो अपील अगेंस्ट रिव्यू, सो देयर वुड बी हार्डली एनी केस लेफ्ट फॉर दिस अपील टू बी एक्सरसाइज। ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन पॉइंट इज दैट गिविंग ऑफ पावर, हु कैन गिव दैट पावर अपील? आप बता देना उसका इफेक्ट क्या है। इसका इफेक्ट ये है कि हार्डली एनी इफेक्ट। सर मुझे नहीं मालूम Because it is not a power against a review. आई एम नॉट देयर टू से कि कितने केसों में रिव्यू हुआ है, नहीं बास केसों में नहीं हुआ होगा रिव्यू, उसके ऊपर तो राइट खुल जाएगा फ्रॉम 1973। आपको घबराहट क्यों है? हमारे काम बढ़ जाएगा ना। घबराहट की बात नहीं है, नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सिर्फ ये केस कि घबराहट क्यों में, नहीं। घबराहट देखें, से आर्गुमेंट नहीं है। आप कॉन्स्टिट्यूशन या आप- तो प्रिवेल या नहीं करेगा। अब वी हैव नो टू वेज, आइदर द कॉन्स्टिट्यूशन के जो ठीक है, provisions बार हैं- बार ये बात जी। रिट्रेट ना करें ना, नहीं, समझ आप गए एक कह रहे हैं दफा। कि घबराहट तो नहीं हो रही सर, घबराहट तो नहीं हो रही। पॉइंट इज दैट कि आइदर कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है या नहीं देता, ये कॉम्पिटेंस है या अच्छा, नहीं सुन है। ली बात है ना, जी। बार बार कहने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता है ना। खत्म। अब हम अगले जो होंगे सुनेंगे उनको, अगर उनको आपको 20 मिनट सुनेंगे, ठीक है। थैंक यू सर। विश्व की तरफ से एक दो हैं। हाँ, इस पे ठीक है, वही अपील में कर दे तो करिए। ठीक है, हाँ? घबराहट की हालत है। मैं कह दिया ना, सुना दिया ना मैंने। सिर्फ आपको